Welcome, folks. If you are tuned in, we are going to start in maybe 5 minutes. We're just going to wait for more people to join in, and we can start. Today's topic is working from home. A lot of people might think it's Gerilu Kaam, but it's Ghar Kaam. In the meanwhile, if you have any questions, comments, keep posting them. And what we will do is, at the end of this talk, we will answer these questions as well. We might even do this in the meanwhile, but we'll see if there's interesting questions coming in as well. So let's just take about 3 minutes more, and then I think we'll start the session, or whenever I get the go ahead here from Saad. Hello, everybody. Thank you for the comments. We're just going to begin in a few minutes. We're just about to begin in a minute or so. All right. I think we can start. All right. So thank you all for coming in today. We're talking about working from home. Within Corona, everybody has started shifting and working from home. हो ही रहा था कि a lot of people were talking about why it's harder for them working from home because they were spending more and more of their time, just spending time on call, and they were spending a lot of time on chat, and people were just getting exhausted. Well, then literally they feel like they're on the phone for 8 hours, and having an 8-hour long call is very exhausting. So let me, by way of introduction, let me just switch here. So today we're going to talk about how can you work from home? What are some of the ways you can manage your teams? How can you run a remote company, a remote team, all that, right? And why am I talking about this? I've been building companies. So my name is Nash. I am the CEO of Integri, and I've been building companies for more than 15 years. And my current company, Integri, has been fully distributed since the beginning. हमें तकरीबन 3 साल हो गए हैं, and our entire company, we are about 20 people, and we are in 14 cities of Pakistan, and in San Francisco as well as in Berlin. So we're sort of distributed all over the world. और कोरोना से भी पहले, we designed this entire company कि हम पहले दिन से distributed home. And my personal view is that distributed company is better than an in-person company. And this is true with or without Corona. And so what I want to do today is I want to share some of the lessons that we've learned in the last few years about how to build and work from home. And working from home is not new. हमारे सारे किसान जो हैं, they've been working from home since the very beginning, you know. But what happens is people, when they start working from home, they try to recreate the experience of working in person. And so the way you talk to people in an actual company is you just go on to them and you talk to them one-on-one. Uska jo online equivalent hai, that's basically making a call or asking to chat or stuff like that. And what the problem with that is that it very quickly breaks down. If you're talking with too many people at the same time, or if the only thing you're doing is talking with people, you might not really get any work done. So this talk is about just aligning you with that. So Integri, हमारी कंपनी इस मामले में थोड़ी सी खास इस तरीके से है कि not only are we distributed in space, आप कहीं से भी काम कर सकते हैं, but we're also distributed in time. आप किसी भी वक्त काम कर सकते हैं. And this is
much harder to achieve. And we'll talk about this at the very end. Today, my main goal is to make you understand how to work from home while, let's say, being on the same time zone. So without a lot of distribution in that area here. Acha, generally, I'm going to jump aage piche here, and you can feel free to put in your comments, and you can sort of ask questions along the way. So one of the things, the key thing people do wrong is when people try to shift towards chat and calls. And what you want to do instead is as your company grows, as your team grows, you want to have some system in place of getting work done. Now, if you're an engineering company, which we are a tech company, you have a issue tracker. Most companies use Jira. Some people use some other tools, maybe using a task tracker like Asana. And what you want to do is you want to get work through long written form, not through chat. अगर आपको जब भी कोई काम करना है, उसके लिए if you have to ping somebody, if you have to send a chat message, your process is broken somewhere. And so there are different ways of doing things, but I'll just walk you through a few examples here. Again, as a tech company, what happens is here's for example a bad way of doing things. The bad way of doing things would be we are going to implement something. We're going to work on a feature. And let's say I am the CEO, and so I first message, I send a chat to my product manager. And me and the product manager, we set up time, we call, and we talk about what the product feature is going to be. And once we do that, what we do is we then call in an engineer on the call. And so my product manager will have then a call with the engineer, and they will have a conversation कि जी हमने काम क्या करना है. फिर जो engineer होगा वो बाकी engineer से बात करेगा. And so the problem with this is it's like Chinese whispers. मैंने उससे बात की, उसने उससे बात की, और हर दफा जब ये बात होती है पूरी की पूरी बात दोहराई जाती है, और हर दफा जब बात दोहराई जाती है वो चेंज हो जाती है और उतनी अच्छी नहीं होती. और इसमें जब भी कोई बंदा आना होता है, किसी बंदे को मजीद उसमें ऐड करना होता है, वो पूरी कहानी दोबारा दोहरानी पड़ती है. इंस्टेड अगर आप बिल्कुल छोटा सा चेंज करें इस प्रोसेस के अंदर, वो ये है कि बजाय कि आप डिफॉल्ट टू कॉलिंग या डिफॉल्ट टू चैट, अब ये क्या करें कि यू स्टार्ट ऑफ विद लेट्स से स्टार्टिंग अ डॉक्यूमेंट. इट कुड बी समथिंग एज सिंपल एज ए गूगल डॉक शुरू कर दिया. Excuse me. So for example, you can start with something very simple. You can have a Google Doc, which is like a specification. जो भी आपका आइडिया था प्रोडक्ट फीचर का, या जिस चीज पे भी आपने काम करना है, you can first write the concept or the idea on paper first, right? वो फिर आप शेयर करें जिनके साथ आपने लेट्स से प्रोडक्ट मैनेजर थे उनके साथ आपने शेयर किया, या जिसने किस स्पेक्स पे काम करना है, राइट? एंड देन द बेनिफिट ऑफ डूइंग समथिंग लाइक दैट इज के दे विल फर्स्ट रीड इट ऑन देयर ओन टाइम, वो खुद उसको पढ़ेंगे, और फिर उसी डॉक्यूमेंट पे इनके कोई सवाल होंगे, वो कमेंट्स के थ्रू दे कैन आस्क दोस क्वेश्चंस. नाउ इसको हम कहते हैं एसिंक कन्वर्सेशन. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कन्वर्सेशंस. एक होती है सिंक्रोनस. मिसाल के तौर पे अभी जो हम कॉल कर रहे हैं, अभी जो हम बात कर रहे हैं, दिस इज सिंक्रोनस, यानी ये रियल टाइम है. फोन कॉल सिंक्रोनस होती हैं, उसी टाइम होनी होती हैं. एसिंक्रोनस मुराद होता है कि आपने मुझे कोई चीज भेजी, मैंने उसको अपने टाइम पे देखे, मैंने उसको अपने टाइम पे जवाब दिया. ईमेल मिसाल के तौर पे एसिंक्रोनस है, उसके लिए दोनों पार्टीज को ऑनलाइन एक साथ होने की जरूरत नहीं होती. सो ए गुड डिजाइन ऑफ कम्युनिकेशन इज एसिंक्रोनस इन द सेंस कि आपने डॉक्यूमेंट जो लिखी, जब आप एक टाइम लेके डॉक्यूमेंट लिखते हैं, अपना आइडिया लिखते हैं, आपको सोचना पड़ता है कि व्हाट इज इट आई एम थिंकिंग अबाउट, और फिर जो आप लिखते हैं उसको इट क्लैरिफाइज योर थिंकिंग, राइट? सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू. और फिर जब किसी के साथ शेयर करते हैं, वो फिर अपना टाइम लेके उसको सुकून से पढ़ सकते हैं और उसके ऊपर अपने कमेंट्स दे सकते हैं, राइट? एंड सो फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर हम किसी डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं बैक एंड फोर्थ, वो कमेंट करते हैं, मैं फिर आगे उस पे आई फर्दर वर्क, वी डू सम चेंजेस, उसमें हमने मजीद की चीजें ऐड रिमूव करनी हम करते रहते हैं. Once we've done with that, what happens is we can then tag on the document the engineer who's going to work on this. Now again, the engineer is going to come in, the 2 or 3 engineers, और उसको पढ़ेंगे डॉक्यूमेंट को. उनके अगेन जो सवाल होंगे ना, वो उस पे वो डाल सकते हैं. This does not have to be a call. This is again a document जो अपने टाइम पे वो पढ़ रहे हैं, अपने टाइम पे उस पे वो go through कर रहे हैं, right? And what happens is they can then ask questions, they can then say कि इसके बारे में क्या है या उसके बारे में बताएं, and they can ask all the questions that they can. उसके पर ये होगा कि इंजीनियर टिपिकली अपना डिजाइन डालते हैं, उसको इम्प्रूव करते हैं, and once they've done that, तो फिर you can move that entire specification to a system like Jira. Now इसमें की चीज ये हो रही है कि सारा कुछ है किसी सिस्टम के थ्रू हो रहा है, किसी प्रोसेस के थ्रू हो रहा है. मिसाल के तौर पे पहले गूगल डॉक पे थे, फिर हम किसी टास्क मैनेजर चले गए, तरह Jira. तो मिसाल के तौर पे आपने ये देखना है कि प्रोग्रेस क्या चल रही है, तो आपको किसी से खुद चैट पे मैसेज करने की जरूरत नहीं है, आप Jira में जाकर देख सकते हैं कि स्टेटस क्या चल रहा है.
So that's the fundamental change here. कि बजाय कि मैन्युअली आप किसी से पूछें, किसी चीज मांगें, आप एक प्रोसेस इन प्लेस लेकर आए, कोई सिस्टम लेकर आए, एंड द प्रोसेस डज नॉट हैव टू वेरी हैवी. मैंने बताया ना, सिर्फ एक गूगल डॉक कैन बी अ सिंपल प्रोसेस व्हिच यू कैन यूज, राइट. लेकिन कॉल्स के कुछ फायदे भी हैं. मिसाल के तौर पर एक दफा गूगल डॉक बन गया, हर बंदे ने पढ़ लिया, उसके ऊपर आप बेशक कॉल कर सकते हैं. उससे हर बंदे का टाइम सेव होता है, हर बंदे को आइडिया ऑलरेडी होता है कि बात क्यों नहीं है. एंड सो अ ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन इज अ ग्रेट वे of spending or using a call, asynchronous communication के लिए, right? So so आप basically when you are running a remote system, ये remote company, आपको कुछ systems बनाने होते हैं. कुछ मैंने भी आपको examples दी. एक काफी अच्छी example है Scrum के अंदर, वो है daily check-in की, daily stand-ups को कहते हैं. और उसका फायदा होता है कि everybody within the day, आप ये 15 मिनट की कॉल होती है, everybody can log in on that call. It could be Zoom के through या जिस तरह मर्जी. And then what people do is कि once a day they will come in and they will talk about three things. तीन सवालों का जवाब देंगे. So we go around the room. हर बंदे से ये सवाल पूछते हैं, अच्छा आपने पिछले 24 घंटे में क्या काम किया, आप अगले 24 घंटे में क्या काम करना चाहते हैं, और अगर किसी चीज में हेल्प की जरूरत है. स्टार्टर मीटिंग्स एजाइल में काफी कॉमन होती हैं. इसका फायदा इन डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी ये होता है कि अगर आप पहले नहीं कर रहे थे, इसको इस टाइम पे करने का फायदा ये होता है कि बिकॉज एवरीबॉडी इज वर्किंग फ्रॉम होम, एक दफा दिन में एज अ टीम everybody getting together and with their video on or maybe just audio and just talking about कि जी this is what we're doing and just hearing कि हर बंदा किस चीज पे काम कर रहा है, it builds a sense of camaraderie which I feel is important in today's time considering कि हमारी social distancing से चल रही है and we don't necessarily get to meet and talk to people, so it's a good thing sort of to do. But ये एक system or processes लेकर आए, like have a daily time set up in our company. हम रोज 3:30 बजे एक दफा everybody logs in and we all have a around the room. ये 20 से 30 मिनट की कॉल होती है, but something we do every day and we find it helps a lot in a distributed company. So if you're a remote team, this is a good practice to have within your company. All right. मैंने आपको बताया कि हम कि एक अच्छा तरीका काम करने का है यूजिंग गूगल डॉक्यूमेंट्स, इज बेसिकली यूजिंग अ लॉन्ग फॉर्म, अ रिटन वर्ड के थ्रू, राइट. तो हमारी कंपनी के अंदर भी हम क्या करते हैं कि वी यूज डिफरेंट टूल्स. मिसाल के तौर पर यूज अ टूल कॉल्ड कॉन्वो, बट यू कैन यूज एनी टूल यू वांट, फॉर एग्जांपल गूगल डॉक्स वगैरह. जो भी हमारा एक नया नोट बनता है, चाहे वो किसी प्रोडक्ट फीचर के बारे में बात हो, चाहे कोई नई पॉलिसी हो, हमेशा पहले लिखा जाता है, उस पर डिस्कशन होती है, वो डॉक्यूमेंट इवॉल्व होता है. एंड चूंकि इससे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स बनते रहते हैं, हम क्या करते हैं कि वी मेक श्योर कि हमारा जो कंपनी है उसका एक मास्टर टेबल ऑफ कंटेंट्स है. कोई भी नया डॉक्यूमेंट बनता है उसके अंदर उसका इंदराज कर दिया जाता है या फिर किसी एग्जिस्टिंग नोट के थ्रू उसको लिंक कर दिया जाता है. तो ये मैं सिर्फ स्क्रीनशॉट लगाई थी फ्रॉम द इंटरनल सॉफ्टवेयर जो हम यूज कर रहे हैं. और ये शुरू का पार्ट है, ये वो है जो कि हर इंजीनियर को गो थ्रू करना पड़ता है. उसमें हम पूरी कहानी बताई हुई है कि हम एज ए कंपनी कैसे काम करते हैं, हमारे स्क्रम कैसे करते हैं, जिरा कैसे यूज करते हैं, उस तरह की सारी चीजें. एंड सो इफ यू आर अ कंपनी जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपका काफी कुछ अब जो है वो डॉक्यूमेंट की शक्ल में बनता जाएगा. उसका अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे इन सम शेप और फॉर्म, you will very quickly lose track of things. So even if you're a Google Doc, एक मास्टर गूगल डॉक बना लें जहां से आप बाकी तमाम चीजों को लिंक कर सकें. हमने लिटरली ये किया था कि हमारी कंपनी में एक रोल है, आई टुक द रोल ऑफ अ लाइब्रेरियन विद इन आवर कंपनी, एंड व्हाट आई डिड वाज आई रोट द रूल्स के अगर आप कोई पोस्ट बनाते हैं उसको किसी एग्जिस्टिंग पोस्ट से लिंक होना है. आपने पोस्ट बनाने से पहले या डॉक्यूमेंट बनाने से पहले आपने सर्च करना है कि पहले ये डॉक्यूमेंट तो नहीं बनी हुई. बेसिकली इट्स जस्ट फॉलोइंग गुड हाइजीन. एंड जो आपकी कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिस तरह लोग घर से काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें बनती जा रही हैं, तो आपको उस तरह करना पड़ना है, राइट. मैं आपको बताता जाऊं कि अच्छी कंपनीज में ये प्रैक्टिसेस ऑलरेडी फॉलो हो रही होती हैं, लेकिन अब चूंकि आप डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इन चीजों की मजीद जरूरत पड़ रही है. तो हमने ऐसा कोई चीज चेंज नहीं की इन द टाइम ऑफ कोरोना. हम पहले से ही डिस्ट्रीब्यूटेड थे, लेकिन मैंने ये देखा कि जो अच्छी कंपनी थी उनमें ऑलरेडी ये प्रोसेसेस इन प्लेस थे. एंड सो इवन इफ आप चाहे इन पर्सन हो चाहे डिस्ट्रीब्यूटेड हो, उसमें बहुत ज्यादा आपका डे टू डे में फर्क नहीं आता था उसका. तो आप व्हाट कैन यू राइट डाउन, प्रैक्टिकली एनीथिंग जो कि एक, इसको हम कहते हैं आर्टिफैक्ट, एनीथिंग व्हिच इज ए वर्क रिलेटेड आइटम, उसको आप लिख सकते हैं. दिस कुड बी फीचर्स, स्पेसिफिकेशंस, टेक्निकल डिजाइन हो सकता है, आइडियाज, पॉलिसीज, हाउ टूज. मिसाल के तौर पे अगर आप डिप्लॉयमेंट करते हैं, तो जो इंजीनियर डिप्लॉयमेंट करता है ना, वो इन अ कंपनी व्हाट हैपेंस इज के उस पे सब बंदे रिलाई करना शुरू हो जाते हैं.
what that person should do is कि they should write the entire process कि जी अच्छा deployment कैसे होती है, right? या फिर जब एक नया इंजीनियर आता है तो उसने अपनी environment setup कैसे करनी है, या फिर हम मिसाल के तौर पे अगर हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें हम जो हमारा राइटिंग स्टाइल है या हमारे जो डिजाइन पॉलिसी वो क्या है. I mean, there could be many things, but बजाय कि आप हर दफा किसी को बताएं, write that stuff down. And there are quite a few if you look at within your company, there are quite a few ideas which you can use to write things down. All right. This is again a quick example. You can use Google Docs, but यहाँ पे it's a simple example कि हमने एक technical feature पे काम करना था, और यहाँ पे हमने क्या किया कि उसका as you can see here कि हमने लिखा कि जिसकी problem क्या है, उसका algo पूरा explain किया. Right side पे आप देख सकते हैं उसके around discussion चल रही है, उसमें engineers से हम interact करें कि किस तरह we can work on this. And you can see on the top right यहाँ पे it has almost 140 comments. But this is how a document शुरू होता है, वो एक या दो लाइनों से शुरू होता है, लेकिन करते करते over maybe a week or 2 weeks it becomes much better. The engineers get involved, उसमें feedback आता है. तो ये जो actual document है ना, this is the actual work we're doing. पहले हमारा काफी सारा काम या पहले आपका काम काफी ज्यादा वो जुबानी कलामी में शायद होता हो, डिजाइन कभी कोई इंजीनियर पहले अलग से लिखता ना हो, लेकिन आप एक अच्छी प्रैक्टिस है कि डिजाइन को लिखें, डिजाइन को डिस्कस करें, डिजाइन इम्प्रूवमेंट्स को थ्रू करें, राइट? ऑलराइट. इसके अलावा ना सिर्फ आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, यू कैन ऑल्सो मेक वीडियोस. देयर इज अ वेरी नाइस टूल कॉल्ड लूम. यूज loom.com, या आई थिंक loom.com भी है. उसके जरिए आप फॉर एग्जांपल अगर मैंने किसी को एक सेशन देना है कि हमारा लेट्स से एक पर्टिकुलर प्रोसेस कैसे चलता है, या फिर हम वेबसाइट पे हम चेंजेस कैसे करते हैं, हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट है, तो उसका जो प्रोसेस है कि जी मेन्यूज यहाँ पड़े हुए हैं या हमारे पेजेस इस तरह ऑर्गेनाइज्ड हैं, आई कैन मेक अ वेरी क्विक 10-minute वीडियो. और चूंकि वो वीडियो एक बंदे नहीं देखनी, वो 2 या 3 या 4 लोगों ने देखनी है, मेरी एक वक्त की इन्वेस्टमेंट वो कई बार इस्तेमाल होती रहती है. एंड सो यू कैन यूज लूम टू मेक वीडियोस. लूम का अच्छा फायदा क्या है कि वो आपकी स्क्रीन भी कैप्चर करता है और आपका कैमरा भी कैप्चर करता है. सो यू कैन डू बोथ थिंग्स एट द सेम टाइम. अभी मैंने आपको एग्जांपल दी कि एक प्रोसेस किस तरह का हो सकता है. दिस इज अ प्रोसेस वी फॉलो. हमारे पास जब आइडिया आता है, उस आइडिया के टाइम से ही हम एक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं, और वो जो डॉक्यूमेंट होता है वो फिर प्रोडक्ट ब्रीफ की शक्ल बनती है, उसमें प्रोडक्ट काम करती है. जब वो आइडिया पूरा हमारा सॉलिड हो जाता है, उस पर हम RFC कहते हैं, रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स. उसमें इंजीनियर्स आते हैं, उसमें क्वालिटी एश्योरेंस आते हैं, और उसमें हम बेसिकली डिस्कस करते हैं इसमें इंप्रूवमेंट्स क्या होनी है. और डिपेंडिंग अपॉन काम क्या है, दिस कुड बी अ वेरी क्विक प्रोसेस वन डे, और इट कुड बी वेरी लॉन्ग प्रोसेस, कुड बी 1 month. लेट्स से हम पूरा एक कंपनी का वर्जन 2 से वर्जन 3 पे किसी हम प्रोडक्ट पे जा रहे हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन कुड बी, उसका सिर्फ डिजाइन जो है कुड बी 1 month ऑफ डिस्कशन. तो उस पर RFC होता है, उसका डिजाइन निकलता है, फिर उसकी हम जिरा पे शिफ्ट उसको कर देते हैं. एक जनरल जो एक पैटर्न है, इसको हम कहते हैं एंटी पैटर्न. अगर आप नोट करें ना कि आपको कुछ चीज बार बार चैट पे करनी पड़ी है, बार बार स्टेटस मांगना पड़ा है, बार बार किसी को कुछ चीज रिवाइंड करनी पड़ी है, सो दैट्स समथिंग इज ब्रोकन, कोई प्रोसेस ब्रोकन है. एंड कीप आस्किंग योरसेल्फ कि मैं चैट में जो बार बार करने की जरूरत क्यों पड़ी है. इन माई एक्सपीरियंस उसकी 2 ही या 3 ही वजह होती है. एक तो होता है कि उसके लिए कोई सिस्टम इन प्लेस नहीं है. एज एन एग्जांपल, अगर मैं स्टेटस पूछता हूँ कि यार ये फला फीचर कहाँ तक पहुंचा है, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, मेरे पास जरा है, मैं जरा पे जाके देख सकता हूँ कि वो टास्क कहाँ है, क्या वो टू डू में पड़ा है, वो करंटली इन प्रोग्रेस में पड़ा है या डन है. एंड सो द कल्चर विद इन द कंपनी या विद इन योर कंपनी हैज टू बी के एवरीबॉडी नीड्स टू मेक श्योर कि सारा जो काम कर रहे हैं वो अपने टूल्स में अपडेट करें. समटाइम्स ये इशू होता है कि पीपल माइट नॉट बी यूजिंग दोस टूल्स, तो फिर ये CEO की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि दे वांट टू मेक श्योर कि वो ये इन्फोर्स करें विद इन द कंपनी कि ये टूल्स हम यूज कर रहे हैं, दिस इज द मेन वे वी यूज थिंग्स, एंड हम इन चीजों को हम चैट पे डिस्करेज करते हैं. सो यू वांट टू डू दैट एज वेल. यू वांट टू सॉर्ट ऑफ you want to reduce the reliance on chat as a way of getting things done, और ये CEO की तरफ से ही आना होता है. This is a relatively harder, but this is a very important thing. अक्सर कंपनीज के अंदर रिक्वायर्ड होता है कि आपने एक सर्टेन टाइम से सर्टेन टाइम पे बैठना है, 9 से 5 आके बैठना है. नाउ अब चूंकि आप डिस्ट्रीब्यूट कंपनीज, आप रिवॉर्ड कंपनीज हैं, आपका कोई मोस्ट कंपनीज में कोई टाइम ट्रैकिंग उस तरीके से नहीं है कि आपने हाजिरी भी देनी है, उस तरह करके देनी है. कुछ कंपनीज में होगा भी, लेकिन इन आवर कंपनी, इन आवर ओपिनियन, एक जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो इनपुट पे नहीं चलती. इनपुट से मुराद ये है कि आप अपना इनपुट क्या डाल रहे हैं. यानी अगर आप दिन के 8 घंटे लगा रहे हैं, दैट इज इनपुट फोकस्ड, कि जी मैंने अपने 8 घंटे लगा दिए हैं, मेरा सारा काम हो गया.
हम इंस्टेड है आउटपुट फोकस्ड। आउटपुट फोकस से मुराद ये है कि आपका एक्चुअल काम क्या है। तो मिसाल के तौर पे सेल्स के लोगों का काम क्या होता है, उनका काम होता है कि उन्होंने सेल्स लेकर, उनके खास कोटा होता है, उन्होंने खास डॉलर्स लेकर आने होते हैं। जो इंजीनियर्स होते हैं उनकी लेट से जो टिकट्स क्लोज होनी होती है उसको हम स्प्रिंट वेलोसिटी कहते हैं, उनका काम होता है वो डिलीवर करना। जो सपोर्ट के लोग होते हैं उन्होंने कॉल्स आंसर करनी होती हैं, उन्होंने जो है दे हैव टू डू थिंग्स लाइक दैट, राइट। एंड सो द आइडिया इसके बजाय कि आप लोगों से कहना कि आपने 8 घंटे काम करना, आप मेट्रिक्स पे जाएं। तो मिसाल के तौर पे हम ये करते हैं कि एज ए कंपनी हमारी 2 हफ्ते की स्प्रिंट होती है जिसके दरमियान हम सारा काम करते हैं। हम 2 हफ्ते को प्लान करते हैं। 2 हफ्ते में हर हर बंदे को काम दिया होता है कि आपका काम ये है और आपका काम, जो भी आपका काम होता है वो हम जरा में टिकट्स की शक्ल में बना के आपको दे देते हैं। हर टिकट को हमने साइन दिया होता है और जो साइज होता है ना उसका, वो टीम ने मिलके ही दिया होता है। इसको कहते हैं प्लानिंग पोकर। इट्स अ बिट टेक्निकल बट आप बस ये समझें कि जो सीनियर लीड्स होते हैं वो मिलकर डिसाइड करते हैं कि ये टिकट जो है क्या ये 1 पॉइंट की है, 2 पॉइंट की है, और ज्यादा से ज्यादा 13 पॉइंट्स तक होता है। अगर उससे बड़ी टिकट है उसको हम ब्रेकअप आउट करके 2 में डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारा फिर गोल ये होता है कि एज समबॉडी विद इन द कंपनी, आपका गोल होता है कि आपने 2 हफ्ते के या 1 हफ्ते के आपने 15 से 20 पॉइंट्स डिलीवर करने होते हैं। आप वो चाहे एक दिन में कर दें, आप वो चाहे पूरा हफ्ता लेके करें, दैट्स इंटायरली अप टू यू। लेकिन मेरा एम्फेसिस ये है कि अगर आपके पास किसी तरह का सिस्टम इन प्लेस नहीं है जो कि आपकी प्रोग्रेस को इंडिकेट करता है, तो आई वुड से कि एज ए कंपनी या एज इवन एज एन इंडिविजुअल आपको अपनी प्रोग्रेस का सही अंदाजा नहीं होता। तो थिंक अबाउट मूविंग अवे फ्रॉम कि जी 9 से 5 बैठना है, और उसके बजाय आप एक्चुअल काम, एक्चुअल आउटपुट देखें। ये चीज मुश्किल होती है, लेकिन अगर आप अपनी कंपनी का फाउंडर हैं, सीईओ हैं, यू कैन पुट सिस्टम्स इन प्लेस लाइक दिस। और अगर इसके हवाले से आपके कोई सवाल हैं तो प्लीज टू आस्क इन द कमेंट्स एंड देन आई विल सॉर्ट ऑफ रन थ्रू दैट उसके बाद। अच्छा जी, मैं वैसे अपनी कंपनी में चैट और कॉलों के बहुत ज्यादा खिलाफ हूँ। मुझे आई टिपिकली डोंट लाइक ए कॉल हो या चैट हो, एंड आई वांट टू वॉक थ्रू 10 रीजंस व्हाई, और उसमें मैं आपको अच्छा बुरा दोनों वॉक थ्रू करता हूँ। अच्छा, एक तो सबसे बड़ा इश्यू होता है कि अगर आप अपना काम सिर्फ चैट के थ्रू कर रहे हैं, जब वो आप या कॉल के थ्रू कर रहे हैं, जब आपकी कॉल या चैट खत्म हो जाती है उसकी सारी वैल्यू खत्म हो जाती है। एज एग्जाम्पल लेट्स से मैंने 7 को कॉल किया, मैंने 7 से कोई डिस्कशन की कि लेट्स से हमने मिलकर किसी चीज पे काम, किसी फीचर पे काम करना है, या लेट्स से हमने एक आइडिया आया कि हमने किसी एक पर्टिकुलर एक टॉपिक पे हमने एक डिस्कशन करनी है। तो अगर वो हम ये जो कॉन्वर्सेशन है किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते तो उसकी वैल्यू बहुत जल्दी लूज हो जाती है, राइट। तो मैं इसके अक्सर एग्जांपल ये देता हूँ कि जी मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं किसी फीचर पे काम कर रहा हूँ, मैं कोड लिख रहा हूँ, मैं अपने साथ किसी क्यूए के बंदे से बात करता हूँ, उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि इसकी टेस्टिंग कैसे होनी है। अभी हम दोनों के दरमियान बात हुई है, ये हमने कॉल पे किया है। इत्तेफाक ये होता है कि वो बंदा छुट्टी पे जाता है, उसकी जगह एक नया बंदा आता है टेस्टिंग के लिए। अब मुझे सही कहानी दोबारा उसको बतानी पड़ती है। फिर जो टेस्टिंग कराता है तो फिर सो हैपेंस इसके हमें वो बात बार बार दोहरानी पड़ती है। लेकिन अगर हमने जो पहली कॉन्वर्सेशन थी वो हमने किसी डॉक्यूमेंट के थ्रू की होती, जो नया बंदा आता है वो सिंपली डॉक्यूमेंट पढ़ता, कोई क्लैरिटी की जरूरत होती है इस पे वो टैग करके कमेंट कर देता, बट हमारा सब कुछ रीयूज हो जाता है, राइट। दैट्स रीजन वन। दूसरा काफी बड़ा इशू चैट और कॉल का ये होता है कि हम वहां पे एक्सपेक्ट करते हैं कि बंदा जो है वो उस टाइम अवेलेबल हो। तो हम 3 लोग अगर आपस में कॉल करना चाह रहे हैं, तो यानी मैं, नदीम और साद, तुम या साद तुम कब अवेलेबल हो, नदीम तुम कब अवेलेबल हो, आधा टाइम इस पे निकल जाता है कि जी कौन किस टाइम पे अवेलेबल होगा। और वो लोग लेट से जो कि आपके टाइम जोन पर नहीं है, या वो लोग जो कि थोड़ा लेट काम करना चाहते हैं, या लेट से जिनके घर बच्चे हैं, या जो कॉल पे एटलीस्ट बाकी तरीके से काम भी कर सकते हैं लेकिन उनके लिए हर वक्त कॉल पे इतना आसान नहीं होता, तो उनके लिए दिस मेक्स इट वेरी हार्ड। तो अक्सर अगर आप किसी का वेट करें ना कि वो जब टाइम बताएगा मैं कॉल करूंगा, तो अक्सर लोगों का आपका काम रुक जाता है। दैट्स नॉट अ वेरी गुड वे ऑफ वर्किंग कि अगर आप दिन में बहुत सारा टाइम वेटिंग पे कर रहे हैं। एंड सो अगेन अगर आप डॉक्यूमेंट पे करते हैं तो डॉक्यूमेंट एक दफा जो आपकी तरफ से रेडी होता है, इट इज नॉट टू द पर्सन, उनको सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया, जब चाहे इस पे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। सेम थिंग हियर, आप इट गेट यू एंड अप वेटिंग अ लॉट ऑन अदर पीपल। अच्छा, एक काफी बड़ा मसला है चैट और कॉल्स का। चैट और कॉल्स का मसला ये होता है कि जब भी आपको कोई चैट मैसेज आता है ना, वो हमेशा आपको अर्जेंट लगेगा, उसकी एक लाल नोटिफिकेशन आएगी आपको और आप फौरन उस पर क्लिक करेंगे। दिस इज ट्रू फॉर इंस्टाग्राम, दिस इज ट्रू फॉर फेसबुक, जो भी नोटिफिकेशन होती है इट मेक्स यू जंप राइट अवे, राइट। उसका नुकसान ये होता है कि आप चाहे बहुत जरूरी चीज पे काम कर रहे हैं, आप उसको छोड़ के फौरन उस पर आ जाते हैं, यू लुक एट दैट, राइट।
um, एक चीज है उसको हम कहते हैं आइजन हावर मैट्रिक्स, और वो पूछते हैं कि यार ये चीज अर्जेंट है कि इम्पोर्टेंट है। अगर कोई चीज अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है तो आपको उसको फौरन करना चाहिए, राइट। अर्जेंट से मुराद ये कि अभी होनी चाहिए, और इम्पोर्टेंट से मुराद ये कि जरूरी है, राइट। वो चीजें जो कि ना अर्जेंट है ना इम्पोर्टेंट, उनको नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके बाद सवाल यह है कि आपको किस चीज पे काम करना चाहिए। क्या आपको इंपॉर्टेंट चीजें जो कि अर्जेंट नहीं है उस पर काम करना चाहिए, या वो चीजें जो कि अर्जेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है। वो क्या चीज होती है जो कि अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है? उसका जवाब है, मिसाल के तौर पे आपको की फोन कॉल आ रही है। जब फोन बजता है आपका, आपके पास 30 सेकंड होते हैं आपने फोन का जवाब देना है, और वो एकदम से अर्जेंट हो जाता है। अर्जेंट से आपने 30 सेकंड के अंदर फोन को उठाकर जवाब देना है। अगर आप फोन उठाते हैं तो इट कुड बी अ स्पैम कॉल, इट कुड बी अ मार्केटिंग कॉल। तो हुआ क्या कि फोन ने अपने आप को अर्जेंट दिखाया, कॉल ने अपने आप को अर्जेंट दिखाया, लेकिन वो कॉल अर्जेंट थी नहीं। सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ समथिंग व्हिच इज अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट। हमने अपनी कंपनी में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करके देखे हैं। आपको हमने अगर बहुत जरूरी काम भी दिया हो, लेकिन कोई आपको बंदा चैट पे कोई रिक्वेस्ट कर दे कि यार कैन यू टेल मी इस चीज के बारे में, फलां चीज के बारे में, हमने देखा है कि लोग टिपिकली सब कुछ छोड़ देते हैं और चैट पे काम करना शुरू हो जाते हैं जो भी इनको रिक्वेस्ट आती है। एंड दैट इज वेरी डेंजरस। वी कॉल दिस द रीसेंसी बायस, कि जो रीसेंट चीज होती है आप उस पर छलांग मारते हैं। एंड हमने ये देखा है कि पीपल आर्ट वेरी डिसिप्लिन व्हेन इट कम्स टू दैट। तो इसलिए दिस इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई चैट एंड कॉल्स हमेशा अर्जेंट होती हैं। अभी मैसेज आया तो मैं जवाब देना है, अभी कॉल है मैं उसको जवाब देना है। ये हम पहले भी डिस्कस किए, बट इन जस्ट टू आई थिंक इट्स वर्थ रिपीटिंग कि चैट और कॉल्स आर मैनुअल वेज ऑफ डूइंग थिंग्स। मैनुअल से मुराद आपको हर दफा वो चीज पे फुल एफर्ट लगाना पड़ता है। घंटे की कॉल हमेशा घंटे की कॉल होगी और इसमें आपको हमेशा घंटा लगेगा। और अगर आप उसको कॉल के जो काम आप कॉल के थ्रू ही करते हैं तो फिर आपको हर दफा कॉल करनी पड़ेगी। ये स्केल नहीं करता। आपका डॉक्यूमेंट स्केल बहुत अच्छा करता है। वो डॉक्यूमेंट है वो 10 लोग पढ़ सकते हैं बाद में। आपकी कंपनी आपके लिखने के बाद वो 2 साल के बाद भी डॉक्यूमेंट यूजफुल रहेगा। लेकिन जो आप कॉल आज कर रहे हैं वो कभी उसकी ना कोई स्केलेबिलिटी नहीं है, उसकी ना कोई रीयूजेबिलिटी है। सो देयर सॉर्ट ऑफ एंड व्हेन दे एंड ओवर देयर। ये दूसरा एस्पेक्ट इंटरेस्टिंग है कि जी इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। मैं आपको क्विक एग्जांपल देता हूँ। अगर हम 5 लोग हैं और हम कॉल में आते हैं, और लेट्स से हमने 9 बजे मिलना था और हम सिर्फ 5 मिनट वेट करते हैं किसी बंदे का, तो जो 4 लोग वेट करते हैं 5 मिनट, तो उनके मिलके 20 मिनट कंपनी के जाया हो गए। अगर वो 10 मिनट लेट है तो फिर वो मतलब इट्स सडनली 40 मिनट्स जो कि एकदम से जाया होते हैं, राइट। तो अगर 1 घंटे की 5 लोग कॉल करते हैं, वो 1 घंटा ना समझे, वो 5 घंटे हैं जो कंपनी के जाया हैं। 5 घंटे इज अ लॉट ऑफ टाइम, राइट। एंड सो कॉल्स टिपिकली जितना टाइम मुझे आपको बताने में, एक्सप्लेन करने में लगता है, उससे जल्दी आप पढ़ सकते हैं। सो मिसाल के तौर पे एक कॉन्सेप्ट अगर मैंने आपको कॉल पे ले जाके एक्सप्लेन करना है, अगर मैं वही चीज लिख के दूं, उसमें मैं इमेजेस भी डाल सकता हूँ, उसमें मैं ड्राइंग भी कर सकता हूँ, तो यू वुड एब्जॉर्ब दैट अप टू 2 to 3 times फास्टर। और चूंकि आप कॉल में उस टाइम बैठे नहीं होंगे, कोई आपके कोई प्रेशर नहीं होगा, तो आप उसको आराम से समझ भी सकते हैं। यू कैन टेक बेटर टाइम टू डू दैट। एक और जो इशू होता है कि अगर हम एक दूसरे के साथ कॉल पे बात कर रहे हैं, वो किसी और को नजर नहीं आता, किसी और के सामने हो नहीं रहा, तो उसमें आपकी हमारी ट्रांसपेरेंसी कम होती है। हो सकता है कि कुछ तरह की हम डिस्कशन करें जिसका फायदा बाकी लोगों को हो सकता है उसके जरिए जो है हम बाकी लोग उससे सीख सकते हो, या उनको नजर आए कि यार डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या चल रहा है। अगर आप कोई सिस्टम यूज करते हैं अगेन जो कि ओपन है, so a key aspect of a distributed company is openness. You cannot run a distributed company अगर लोग बड़े एक दूसरे से मुहतात रहते हैं और वहाँ पे कम्युनिकेशन ओपन नहीं है। उसमें फिर you will end up becoming a when there is not open communication, आमतौर पे the organization becomes very inefficient and very slow. Destroys confidence. इसमें मैंने ये पैटर्न देखा है कि अगर एक कंपनी में एक शख्स है जो कि एक पर्टिकुलर काम करता है, चाहे लेट्स से हम 5 इंजीनियर्स हैं लेकिन डिप्लॉयमेंट सिर्फ एक शख्स करता है, और डिप्लॉयमेंट एज एन एग्जांपल में ले रहा हूँ, उसमें की खास चीज नहीं होती। मैंने 10-15 कमांड रन करने में डिप्लॉय कर दूंगा, लेकिन चूंकि वो कहीं पे लिखा नहीं हो प्रोसेस, मैंने किसी को एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, तो लिहाजा उससे कोई और बंदा सीख नहीं पाता और उनका अपना कॉन्फिडेंस नहीं बनता कि वो खुद उसको आके कर सकें। सो दैट्स व्हाई इट्स आल्सो रियली इंपॉर्टेंट। इनकरेजेस बैड प्रोसेस। ये बहुत कॉमन मैंने देखा है कंपनीज के अंदर कि अगर आपकी कंपनी इसके अंदर एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, उसका सारा दिन काम ही होता है आपको चैट मैसेज करके पूछना है, अच्छा प्रोग्रेस क्या बनी, उसका क्या बना, फलां चीज का क्या स्टेटस है। एंड दैट्स रियली बैड बिकॉज एक तो
it's constant source of tension. It's a constant source of interruption. What the idea is कि अगर आप एक डिस्ट्रीब्यूट कंपनी है, you have to trust people कि वो काम करेंगे, और अगर काम नहीं हो रहा, आपका जो डेली चेक इन है, जो भी उन्होंने डिस्कस किया, स्टैंड इन है, या फिर जो आपका मेट्रिक है, वहां पे नजर आना शुरू हो जाएगा. एंड चूंकि वो ट्रांसपेरेंट है, हर टीम, हर बंदे को मेट्रिक नजर आ रहा है, हर बंदे को चेक इन के टाइम पे नजर आ रहा है कि चीज नहीं हो रही. सो व्हाट विल हैपन इज के द टीम विल होल्ड ईच अदर अकाउंटेबल कि हम सब ये काम कर रहे हैं, हम सब ने अपनी प्रोग्रेस की है, आपकी प्रोग्रेस क्यों नहीं आ रही इसके ऊपर, आपको ये हेल्प की जरूरत है, या वट एवर यू नीड. So the team helps itself, and it's a really good way of encouraging team confidence and team rapport, right? मैंने अक्सर देखा कि आपकी घंटे की मीटिंग हो, उसमें जो भी डिस्कस होता है, अनलेस आपकी उस मीटिंग के अंदर कोई बंदा लिटरली हर चीज को लिख रहा है, यू विल लूज ट्रैक ऑफ थिंग्स. अगर आपने उस मीटिंग के अंदर से सही तरीके से एक्शन आइटम्स ना निकाले, या अगर आपने, और लेट से मैंने भी देखा लोग बहुत ज्यादा चीजें नोट कर लेते हैं उसमें. मीटिंग के अंदर माइट जस्ट बी 3 थिंग्स जो आप डिस्कस करते हैं, लेकिन जो उसके मिनट्स होते हैं उसमें 50 पॉइंट्स होते हैं कि ये भी डिस्कस हुई, भी डिस्कस हुई, भी डिस्कस हुआ. अब उसकी वैल्यू है, ये पता होना कि हमने बात की डिस्कशन क्या की थी, उसको रिकॉर्ड करना एक अच्छी चीज है. फिर जो हमने एक्चुअल जो एक्शन आइटम्स तय किए उसको भी करना एक अच्छी चीज है. लेकिन अगर आप ये इतना डिसिप्लिन में कॉल में फॉलो नहीं करते, जो कि मैंने बहुत ही कम देखा है, अक्सर जो कॉल्स में मीटिंग्स होती हैं, तो अक्सर मीटिंग्स जो कॉल्स होती हैं उसमें कोई, अनलेस आप किसी एक्सटर्नल कस्टमर के साथ बात करते हैं, इंटरनल कॉल्स पे तो मैंने बहुत ही कम देखा है कि कभी हमने सही, या कभी किसी पार्टी ने सही तरीके से मिनट्स वगैरह किए हो. अगेन ये इशू आपको डॉक्यूमेंट या लॉन्ग फॉर्म के अंदर नहीं आता. So these are some of the ideas I wanted to share in regards to what working from home means. उसमें कुछ process हमारी तरफ क्या थे, ये मैंने काफी general सी talk की. I want to talk about pros and cons here, but there's a lot of specifics कि हम किस तरह करते हैं, and there are too many things to we can sort of go through. What I wanted to do was I want to take a pause here, and I wanted to see if you guys have any questions here, we can sort of run through that. अच्छा जी, यहाँ पे I'll go through this. For smaller teams, we found using chat to be more. This is a comment, I guess, from Kumail Pirzada. For small teams, we found using chat to be more effective, using Trello, etc. Seems to reduce a lot of overhead when the info needed to be only shared between a couple of people. For tracking stuff, we're using GitHub issues, built-in Kanban systems, which has been working wonders. हाँ, तो कुमेल आपके भी केस में ना, आप लोग टूल्स पे भी यूज करें ना बीच में. you're using GitHub यूज करें, कुछ तरह की चीज यूज करें. Even for small teams, chat का मसला ये होता है ना कि आपको एक तो you have to be always available on chat. You have to be always be जो भी even अगर हम 2 लोगों से कंपनी शुरू करते हैं, अगर सिर्फ 2 ही लोग हैं कंपनी के अंदर और कोई भी नहीं है, अगर जस्ट यू एंड मी एंड हमने कुछ चीज डिस्कस करनी है, तो फिर तो हमें वी डोंट नेसेसरली नीड टू राइट इट डाउन. लेकिन द फैक्ट इज कि वो चीज 2 लोगों तक रहेगी नहीं. कल आपकी कंपनी ग्रो होगी, कल आपकी टीम ग्रो होगी. वो जो आपने डिसीजंस लिए हैं उसकी वजह क्या थी, इसका डिजाइन क्या था, अगर वो कहीं कैप्चर्ड नहीं है, व्हाट विल हैपन इज के यू विल एंड अप क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ फ्रिक्शन लेटर ऑन, राइट? एज एन एग्जाम्पल, हमने जो कंपनी शुरू की थी, हमने सिर्फ 2 लोगों ने कंपनी शुरू की थी, लेकिन आप डे 1 पे देख सकते हैं कि हमारा पहले दिन आर्किटेक्चर क्या था, वहां से हमने इवॉल्व क्या किया, जो हमने उस टाइम कल्चर बनाया, उसमें जो हमने डिफरेंट पॉलिसीज मेंशन की या डिजाइन की, वो आज तक जो है दे आर स्टिल वर्किंग एंड लिविंग टिल दिस डे, राइट? एंड सो especially if you are a team within a larger company, it's even important to show कि आप exactly कब कर क्या रहे हैं. This is for transparency, this is for the sake के बाकी लोग उसके अंदर आके आपको कर सकें, right? And so that's sort of an important aspect to be able to do so. If you guys have any questions, please continue on adding it at the comment section here. एक और सवाल मुझे अक्सर आता है कि अगर आप इफ यू आर रनिंग अ डिस्ट्रीब्यूटेड कंपनी और अगर आप कॉल्स नहीं करते, हाउ वुड यू नो इफ वर्क इज बीइंग डन? उसके लिए मैं आई वुड से कि यू वुड नीड टू इंट्रोड्यूस ट्रांसपेरेंसी. देयर आर 2 थिंग्स. वन इज के यू वांट टू मेक श्योर कि जो टूल्स आप यूज कर रहे हो हर बंदे को उसके एक्सेस हो.
and you have a way of understanding के उसके भी summary का हो के कितने task हो रहे हैं, कितने task इसको assigned है. So I think that's an interesting way of doing that. All right, here's a question from Masudullah Salim. Hi Nash, we have just shifted to working from home. The most common feedback is it is much more stressful and we miss our office. I know these are initial days and things will become better later on, but what do you think could be some of the reasons causing stress initially after moving from home to traditional office environment to work from home? अच्छा, in my view, stress के ना 3-4 तरीके होते हैं, वजह sources होते हैं. एक मैंने वजह बताई है कि घर से काम करने का जो बिगेस्ट स्ट्रेस होता है कि आप चूंकि कोई सिस्टम टूल इस्तेमाल करें तो जो मैनेजर्स खास तौर पे होते हैं दिन में 8 घंटे फोन पे लगे होते हैं, और 8 घंटे फोन पे होना इट्स गिविंग यू इट्स वेरी इट्स मतलब ये हेडफोन्स में लगाए हुए ये मैं 1 घंटे से ज्यादा लगाऊं तो मेरा सर जो है ना वो पकना शुरू हो जाता है. तो एक तो वो एस्पेक्ट है. दूसरा एस्पेक्ट ये होता है कि यू वांट टू मेक श्योर कि अगर आप घर से काम करें आपके घर में यू वांट टू हैव अ सेपरेट प्लेस फ्रॉम वेयर यू वर्क फ्रॉम वर्सेस फ्रॉम आपकी जो बाकी प्राइवेट लाइफ है. एंड इट्स रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज यू वांट टू हैव एक मेंटल कॉन्टेक्ट स्विच के मैं अभी घर में हूँ लेकिन ये मेरा ऑफिस, ये डेस्क मेरा काम के लिए है. आई हाईली डिस्करेज के आप बेड से काम ना किया करें. आई हाईली डिस्करेज के आप लैपटॉप लेके बेड से ना किया करें. अपनी एक रूटीन डेफिनेटली रखें कि इस टाइम से इस टाइम तक मैंने काम करना है और ये काम का टाइम है. यू वांट टू डू ऑल ऑफ दैट स्टफ, राइट? बियॉन्ड दिस स्ट्रेस की वजह क्या है? मे बी यू कैन शेयर अ फ्यू एग्जांपल्स. आई कैन डायग्नोस या ट्रबल शूट दैट बेटर. अच्छा जी, अली खनी का सवाल है, which is really good question. If you sense that despite your best efforts, an employee is struggling, not focused or lonely, what can you do? अच्छा, मैं हर मैनेजर को बड़ा स्ट्रांगली इंकरेज करता हूँ कि हफ्ते में एक दफा या कम से कम हर 2 हफ्ते में एक दफा हर एम्प्लॉय के साथ या हर जो रिपोर्ट है उसके साथ 1-on-1 का सेशन करें 1 घंटे का. 1-on-1 का डिजाइन क्या होता है कि अगेन एक हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं. उस डॉक्यूमेंट के अंदर जो एम्प्लॉय होता है वो अपना एजेंडा बनाता है कि दीज आर द थिंग्स आई वांट टू टॉक अबाउट, और वो जो एजेंडा होता है दैट दे ब्रिंग अप टू द मैनेजर एंड देन दे सिट एंड दे टॉक के इन चीजों के ऊपर. 1-on-1 कॉल्स वैसे हमेशा कॉल्स होनी चाहिए इवन तो देयर इज अ रिटन डॉक्यूमेंट, लेकिन बिकॉज उसमें आप पर्सनल बात कर रहे होते हैं, यू टॉकिंग अबाउट अपनी फॉर एग्जांपल यू नो यू टॉकिंग अबाउट योर होप्स एंड ड्रीम्स कंपनी के साथ करना का चाह रहे हैं, तो इट्स इम्पोर्टेंट टू बी एबल टू डू दैट इन दैट वे, राइट? तो एक तो वो है. employees may be I mean there are people who will struggle. एक अक्सर सवाल है कि are you जो extroverts हैं वो ज्यादा सफर करते हैं compared to introvert. A very good definition जो मैंने पढ़ी है extrovert और introvert की. Introvert की मैंने बहुत सी definition ये पढ़ी है कि people who gain energy from being alone are introverts. People who gain energy from being around people are extroverts. तो मिसाल के तौर पे अगर आप एक पूरा दिन घर पे रहें, अगर आप उसके बाद एग्जॉस्टेड फील करते हैं या फिर उसके बाद यू डोंट फील वेरी गुड, यू फील वेरी ड्रेन, तो यू माइट बी एन एक्सट्रोवर्ट. इंट्रोवर्ट्स मैं वैसे आई कंसिडर माई सेल्फ एज एन एम्बीवर्ट. मैं इंट्रोवर्ट भी हूँ एक्सट्रोवर्ट भी हूँ. तो आप मुझे सारा दिन PS4 के सामने बिठा दें, मुझे कोई इशू नहीं है, मैं आई विल बी फाइन. लेकिन अगर मैंने किसी पार्टी पे जाना है, लोगों से मिलना, आई विल बी हैप्पी टू डू दैट एंड आई हैव अ लॉट ऑफ फन मीटिंग पीपल एज वेल. लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि आपका अपना मोड क्या, आर यू एन इंट्रोवर्ट और एन एक्सट्रोवर्ट? अगर आप एक्सट्रोवर्ट हैं और आप घर में फंसे हुए हैं, बंदा जिस तरह काफी लोग हैं, आई हाईली encourage you to maybe do some office games. I'll give you an example here. A good game to play is simply कि हम सब वीडियो कॉल में आते हैं, लेट्स से हम 5 या 10 लोग, हर बंदे ने अपने बारे में 3 बातें बतानी है, 2 सच्ची और 1 झूठी, और हर बंदे ने गेस करना है कि सच्ची बात क्या है, झूठी बात क्या है. उसका फायदा ये होता है कि इट्स नथिंग टू डू विद वर्क but it helps you break down the feeling of loneliness. So I definitely encourage you to enable video. आप वीडियो पे कॉल करें, once a week पे करना है उस तरह कर लें, once a day करना है उस तरह कर लें, but and just have a time within the day or the week जो कि not work related or within your work friends, right? So that sort of a thing. And also lastly, I'm not a medical professional. There are some people who would feel depressed within this environment, so you want to be careful regarding that as well. उसके लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अब ऑनलाइन थेरेपी सिस्टम्स बहुत से हो चुके हैं. अगर आप ऑनलाइन थेरेपिस्ट रखना चाहते हैं, पाकिस्तान में भी हैं, बाहर भी हैं, बेसिकली हफ्ते में 1 घंटे का सेशन होता है, आप अपने थेरेपिस्ट के साथ सेट कर सकते हैं, और वो वीडियो भी हो सकती है, ऑडियो भी हो सकती है, चैट भी हो सकती है,
उसका फायदा ये होता है कि it will help you process your emotions, it can help you debug your mind. It's a very good tool. Even if you're a 100% healthy individual, having a therapist definitely helps you just think more about आपके issues क्या चल रहे हैं. So I'm just going a little behind, so just going to go to the next question. Nash, any tips for those who feel challenged to create discipline to work from home? What if your work doesn't give you the option to go async? So these are two questions. अगर आपकी company async में नहीं करती, तो I would encourage you to talk to your friends, your teammates, your managers, and walk them through the benefits of async. उनको ये वीडियो दिखाएं. There are a few very good guides जो कि different लोगों ने बनाई भी हैं. One of the guides I really like is by Basecamp. उनकी आप पढ़े. It's called Internal Communication Guide. है. आप Google करें Basecamp Internal Communication. It's a very nice guide on how to internal communication. Why async is as default is a better way of doing so. डिसिप्लिन का इशू ये है कि अच्छा डिसिप्लिन इज ऑब्वियसली a bit of a personal thing कि मेरा डिसिप्लिन है कि नहीं है. आई पर्सनली फाइंड डिसिप्लिन लाने के लिए ना आपको 2 या 3 चीजें करनी चाहिए. एक तो ये होता है कि अगर लेट्स से आपने अपनी सारी ईमेल गो थ्रू करनी थी या फिर लेट्स से आपने सारे टास्क गो थ्रू करने थे. अब ये नहीं कि आप टास्क कर नहीं सकते, ये नहीं कि आप ईमेल्स का जवाब दे नहीं सकते. होता क्या है कि आप कोई ऐसा टास्क देते हैं कि ऐसी ईमेल देखते हैं कि आपका एक नेगेटिव इमोशनल रिस्पॉन्स होता है. मे बी इट्स अ टास्क which you don't want to do या you don't like to do. Maybe it's an email which is a negative email, कोई नेगेटिव कमेंट है, कोई नेगेटिव बॉस की तरफ से काम है जो कि इट्स नॉट वेरी प्लेजेंट. तो काम से ज्यादा ना उसका इमोशनल रिएक्शन आप पे हावी हो जाता है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट के काम itself मुश्किल नहीं है, काम का मसला नहीं है. इट्स एसेंशियली my emotional state and to ask yourself, अच्छा मैं इस तरह emotionally feel क्यों कर रहा हूँ. तो managing your emotional state is very important just to figure out के why do I feel like this या इस तरह में क्या है. And do take breaks between work. I think that's an important thing to do. A very interesting way of doing disciplined focused work. I highly recommend this कि आप एक कागज लें और उसमें क्या करें कि आप कहें कि मैं this technique is called cycles. आप कहें कि मिसाल के तौर पे मैंने 40 मिनट काम करना है और फिर मैं 40 मिनट के बाद 15 मिनट की ब्रेक लूंगा, राइट. या 45 और 15 यानी घंटे का एक साइकिल है मेरा. 45 मिनट काम है और 15 मिनट की ब्रेक है. उस काम करने से पहले ये लिखें कि अच्छा मैं 9 बजे काम शुरू करूं, सुबह के 9 बज रहे हैं और ये पहला साइकिल घंटे का है, इसमें मैं काम क्या करूंगा उसको लिखें पहले. फिर लिखें चाहिए मैं काम करना क्यों जरूरी है, इसकी अहमियत क्या है. तीसरी चीज ये लिखें कि अच्छा मुझे मैं इस काम को शुरू कैसे करूंगा. A lot of people struggle getting started. Just mention these 3 things. फिर अगला 45 minutes try to get that done. अगर वो आपका होता या नहीं होता, जब 45 मिनट खत्म होते हैं उसके नीचे आप ये नोट करें. फोर्थ चीज लिखें कि क्या मेरा काम हुआ कि नहीं हुआ. You can either say yes, no या half. अगर थोड़ी सी प्रोग्रेस है give yourself 50 marks whatever. और नीचे जो है फिर आप कहें कि अच्छा अगर मेरा कोई काम नहीं हुआ तो मैं नेक्स्ट साइकिल चलाने लगाऊं, अगेन घंटे का साइकिल चलाएं. मुझे अडॉप्ट करने के लिए क्या करना है, राइट. एंड सो यू कैन थिंक ऑफ अ सिस्टम टू अडॉप्ट कि मैंने मे बी देयर वर सम थिंग्स जिसमें मैं ज्यादा फंस रहा हूं या मे बी आई एम फीलिंग हंग्री या व्हाटएवर. बट द आइडिया इज कि फोकस करें कि आप फील क्या करें उसके अंदर. Here's a question by Kumail Pirzada. Is using an automated stand-up system, Slack bots, a good replacement for video audio call and stand-up, like you said, being available daily at the same time isn't very convenient for people distributing. अच्छा मेरा पहले ना ये ख्याल था कि written stand-up is typically better and I think उसकी काफी सारी वैल्यू है. मैं इस पे 3 कमेंट्स करूंगा. एक तो ये कि जो आपका stand-up का टाइम है ना, it does not have to be in the start of the day, it does not have to be in the middle of the day, it can be any part of the time, right. हम आमतौर पे 3:30 बजे इसलिए करते हैं because it is largely overlapping with the team members. जो लोग अर्ली भी उठते हैं, जो लोग लेट भी उठते हैं, उन सबके लिए ओवरलैप होता है. रिटन स्टैंड अप कैन डेफिनेटली वर्क. व्हाट आई वुड सजेस्ट इज के रिटन इफ यू वांट टू डू दैट वो आप कर सकते हैं. यूज अ बॉट कर सकते हैं या फिर यू कैन यूज अ डॉक्यूमेंट एज वेल एटसेट्रा. एंड इफ यू वांट यू कैन मेक स्टैंड अप ऑप्शनल. एक्सक्यूज मी. इशू ये होता है कि द रीजन व्हाई आई लाइक एक दफा दिन की कॉल विद एवरीबॉडी इज या एज अ टीम, इसके अगर अकेले आप डिस्ट्रीब्यूट है ना तो यू माइट take too long just living separately, doing your own individual thing, and you might feel too disconnected. It's a way to bridge disconnection. लेकिन आप उस element को निकाल दें, you can definitely do a written stand-up as well. Ambivert FTW. अच्छा जी, अगला सवाल है. अच्छा, this is Mohammed Taki. Sir, how did you manage to stick to your idea in the initial phase? Because in the start,
You may or may not have upward sale of your product as you predict. What things can you do to keep yourself engaged and others in your idea? So this is a little off topic. I don't know if you have time, we can touch upon that, but we'll touch through that. Sayyid Jafi का अगला सवाल है जी, Nash, can you share what tools you use for collaboration with your team? We primarily use Convo use करते हैं. Convo is a पाकिस्तानी company और वो basically it's like Facebook for work. Mainly हम वो use करते हैं. जो हमारे जो advanced requirements होती हैं, हम उनको move करते हैं to a tool which is either Notion है. अगर आपने इस्तेमाल किया, Notion is like a marriage between Google Docs and Google Spreadsheet. या फिर हम वैसे internally we use Coda. Coda is like a really nice, very advanced tool for storing and organizing information. जो हमारा complex काम होता है वहाँ जाता है. जो हमारे आम जो documents की requirements है वहाँ जाती हैं. We don't use Slack. Like I said, I don't like chat. तो हम हमारी कंपनी में Slack use नहीं करते. I am very anti Slack. इसी तरह and then we use Zoom for any actual calls हमने करनी होती हैं. We use Loom for video recording, and sort of that's the idea. Those are some of the tools that we use over here. A bit of an off-topic question था कि how do you stick to your idea in the initial phase? इसमें बस ये comment करूँगा कि your goal is not to stick to your idea in the initial phase at all. What you want to do is कि you want to understand and validate कि जो आपका idea है, and this is regarding creating a startup. This is a little off topic. लेकिन इसमें ये होता है कि आपका गोल बिल्कुल ये नहीं है कि आपने एक आइडिया उसके साथ रहना. आपका गोल ये आपने वैलिडेट करना है कि आपका आइडिया सच्चा है, सही है कि नहीं है, राइट? एंड सो योर आइडिया इज टू फिगर आउट के whether this idea is correct or not. और अगर आइडिया ठीक नहीं है, लाइक लेट्स से आपको कोई चीज पर लगती है, आपकी कोई असम्पशन थी कि जी मैं ऑनलाइन रोटियां बेचूंगा, राइट? मेरी ऑनलाइन कहानी है, लोग रोटियां ऑनलाइन खरीदेंगे. उस पर आपने असम्पशन की होगी कि जी आपकी डिलीवरी बहुत सस्ती होगी वगैरह वगैरह, लेकिन आपको पता लगता है कि नहीं, डिलीवरी तो बहुत महंगी है, डिलीवरी का कम से कम आपको 100 रुपया पड़ता है. तो जब तक एक बंदा 200 रोटी ना मंगवाए तो उसको बारह नहीं खाता, लेट्स से. नाउ दैट you've known this new information, how can you still make it work? तो उस इंफॉर्मेशन को लेते हुए you want to iterate over your idea, right? That's the idea. अक्सर लोग शुरू करते हैं किसी भी स्टार्टिंग पॉइंट पे शुरू करते हैं, but as they learn about the industry, they end up moving towards a better place. इसको pivot भी कह सकते हैं, लेकिन pivot is considered as a very large thing. These are micro iterations. So हर company को iteration करने की जरूरत है. Every company should be doing iterations, and this is a very common thing to be doing in that case, right? So there is definitely a danger by the startup creator to fall in love with their idea. There's a very good architect जिसका नाम ज़ेन से निकल रहा है. I think it was Christopher Alexander. उसका आइडिया ये था कि whenever he was starting to design a building, वो बहुत जल्दी सिर्फ 5 मिनट लेके एक बिल्डिंग का स्केच बनाया करता था. And then he would make another one, then he would make another one, and he would make maybe 10, 20, 30 sketches. And he would spend very little time, and he would make sure that they're very rough, ताकि वो किसी idea में बहुत ज़्यादा अपना को invest ना कर ले, ताकि he can still look at all these ideas and see which one is better and उनको pick कर सके. So I think it's important to sort of look at it in that way. Think of yourself as a scientist doing an experiment. If the experiment is not proven right, you at least find out what is not going to work, and then you iterate over that, and so on and so forth. So with that, I think we have gone through all the questions, and I think that's also at time. We thought we'd do this for 45 minutes. We are now 5 minutes overboard. Thank you all for joining in today. I think there's a last question in. All right. Any recommended tools for developers, managers, and senior managers which developers can use to manage tasks and senior managers can use to see the progress to avoid worse progress calls, not collaborative tools like Notion. So you definitely must have some task manager within the company. आमतौर पे the golden standard is Jira. Everywhere I've seen in large companies, Jira is being used. उसकी वजह ये है कि Jira is very flexible. Jira के through जो है you can do any plugins वगैरह. So Jira is just one tool. अब होता क्या है कि Jira में columns होते हैं just like Trello, और उसके अंदर you can say कि जी कितना काम हो गया है, progress क्या चल रही है. और इसमें थोड़ी सी एजाइल की बात आ जाती है. एजाइल के अंदर आपकी टीम की स्पीड निकलती है whenever the sprint closes, और उसमें जितना काम जितनी टिकट्स क्लोज होते हैं हर टिकट की एक वैल्यू होती है, उसको सम कर लें, दैट इज द टीम स्पीड. तो आप का रूल ये होता है कि आपने टाइम बॉक्स करना है. 2 हफ्ते का हमेशा आपकी स्प्रिंट होती है.
स्कोप वेरिएबल होता है लेकिन टाइम हमेशा फिक्स्ड होता है, टीम भी फिक्स्ड होती है, तो लिहाजा जो टीम की आउटपुट होती है आपको टीम दैट इज सॉरी यूज लाइक दैट, एक्सक्यूज मी, you want to also instill a discipline for the team to make sure कि जिस चीज पे काम कर रहे हैं वो हमेशा अपडेटेड हो. अगर किस चीज पे काम हो रहा है वो आइटम इन प्रोग्रेस में जाए, कुछ चीज अगर QA के पास है वो QA के पास जाए. एंड कम्युनिकेशन Jira is used as a means of communication. कोई confusion है तो वहाँ पे comments में जाए, कोई QA को हैंड ओवर करना है कोई चीज तो चैट पे ना बताएं, उनको टिकट असाइन करें, राइट? किसी से रिव्यू चाहिए तो उनको चैट पे ना बताएं, उनको टिकट असाइन करें. एंड एवरीबॉडी नीड्स टू मेक श्योर कि जो टूल यूज कर रहे हैं उनको ध्यान दे रहे हैं, they're looking at that. And you enforce this again and again in stand-up meetings by walking through that. So those are some of the ideas. I'm happy to chat later as well in the comments. So if there's any other questions, please do let me know. That's all it. And thank you all for joining in. And if there's any other questions, please leave them in the comments in the chat below. Thank you all and have a great day.